क्या आप जानते हैं इंडियन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम पे 2 बार टैक्स देना होता है, एक बार फॉरेन में और एक बार इंडिया में। फॉरेन इनकम कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सैलरी इनकम। इसी डबल टैक्स बर्डन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ मिलकर DTAA एग्रीमेंट साइन किया है। DTAA एग्रीमेंट मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कैसे हमें DTAA एग्रीमेंट का बेनिफिट लेके फॉर्म 67 फाइल करना है। लेट्स अंडरस्टैंड DTAA एग्रीमेंट फर्स्ट। इंडिया ने अगर किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन अथॉरिटी के साथ मिलकर DTAA एग्रीमेंट साइन किया है देन इट विल बी कवर अंडर सेक्शन 90 एंड 90A। अगर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है देन इट विल बी कवर अंडर सेक्शन 91। 90 और 90A में 2 टाइप के एग्रीमेंट हैं। फर्स्ट एग्जम्पशन मेथड, दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड में रेजिडेंट को केवल फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करना होगा, उससे रेजिडेंट कंट्री में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन टैक्स क्रेडिट मेथड रेजिडेंट नीड टू पे टैक्स इन बोथ कंट्रीज बट रेजिडेंट कंट्री विल अलाउ टू टेक टैक्स क्रेडिट ऑफ लोअर ऑफ बोथ कंट्रीज टैक्सेस। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे हमें टैक्स रिबेट कैसे क्लेम करनी है अंडर टैक्स क्रेडिट मेथड बाय फाइलिंग फॉर्म 67। अब जानते हैं हमें क्या क्या डेटा रेडी करना है फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 67। फर्स्ट वी नीड सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। तो अब सवाल आता है ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगी फॉरेन कंपनी और फॉरेन अथॉरिटी जहाँ से हमने इनकम अर्न की है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया कंपनी प्रोवाइड TDS सर्टिफिकेट एंड इन US company provide form 1042S. Second, we need form 16 for calculation of average tax rate. Third one is conversion rate. क्योंकि फॉर्म 67 में सारा डेटा हमें INR में फिल करना होता है, तो फॉरेन इनकम को पहले हम INR में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट यूज़ करेंगे, जिसका लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब सवाल आता है हमें किस दिन का कन्वर्जन रेट लेना है। तो जिस महीने में हमें इनकम हुई है उसके पिछले महीने के आखिरी दिन का कन्वर्जन रेट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिसंबर महीने में इनकम होती है तो हम 30 नवंबर का कन्वर्जन रेट लेंगे। अब इस कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं और वही डेटा हम फॉर्म 67 में यूज़ करेंगे। एक सैलरीड पर्सन को US कंपनी से दिसंबर मंथ में $100 का डिविडेंड इनकम हुआ है। US कंपनी ने $25 टैक्स डिडक्ट किया है एट द रेट ऑफ 25% एज पर DTAA एग्रीमेंट। तो उसकी INR में फॉरेन इनकम हो जाएगी 8100 एंड फॉरेन टैक्स विल बी 2025। यहाँ मैंने कन्वर्जन रेट 30 नवंबर का यूज किया है बिकॉज उसको दिसंबर मंथ में डिविडेंड इनकम रिसीव हुआ है। So conversion rate on 30th November is 81 rupees per dollar. Now we need to calculate tax payable under normal provision in India. उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना होगा। हम एवरेज टैक्स रेट फॉर्म 16 की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। Here I downloaded form 16 of a salaried person. एवरेज टैक्स रेट के लिए हमें 2 डेटा चाहिए। फर्स्ट टोटल ग्लोबल इनकम एंड सेकंड टैक्स ऑन टोटल ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम इज इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम हमने डायरेक्टली फॉर्म 16 से ग्रॉस टोटल इनकम से ले लिया है। फॉरेन इनकम इज 8100 एज वी नो, सो अवर टोटल ग्लोबल इनकम इज दिस। फॉर टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम वी टुक टैक्स ऑन इंडियन इनकम डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्म 16। टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, हियर आई टुक 30% ऑफ 8100। क्योंकि एसएससी की नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो एसएससी विल कम अंडर टैक्स स्लैब ऑफ 30%। By adding both tax on foreign income and tax on Indian income, we got this tax on global income. So average tax rate is tax on global income divided by total global income. Now we here get 15% of average tax rate. Now we calculate tax payable under normal provision in India. So it is dividend income multiplied by average rate of tax. Here we get 1215. Now tax rebate will be lower of both countries' taxes. So US tax is 2025, Indian average tax is 1215. Hence we will get rebate of rupees 1215. Now we have all data for filing form 67 and form 67 online ही फाइल होगा। So do log in your income tax website first. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए फॉर्म 67 हमें ITR से पहले भरना है, अदरवाइज हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। सो गो टू ई फाइल हेड
Then click on income tax form and click on file income tax form. Here we found 3 heads. Go to last head of person not dependent on any source of income. Click on this head. Go to next page. Now we found head double taxation relief form 67. Click on file now. Select the assessment year and click on continue. Then click on let's get started. Now there are 4 parts: part A, part B, verification and attachment. Part A is very important because यही सारा data fill करना है. Click on part A, then click on add details. Now this type of window will open. First, name of country. Here I select United States of America as per our example. Second is source of income. Here I am taking dividend income. You can take as per your nature of income. Income from outside India in INR 8100. Tax paid outside India in INR 2025 at the rate of 25%. Tax payable on such income under normal provision in India, rupees 1215. I am using the same data of example. Tax payable on such income under section 115 JB and JC. This section applied on companies. So here I am writing 0. Tax claim under section 90 and 90A. Here we need to write article number. Article number 10 is for dividend income and 11 for interest income as per DTAA agreement with US. मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इनकम टैक्स साइट का लिंक दिया है from where you can get article number as per nature of your income. Now rate of tax as per DTAA agreement, it is 25% with US. Credit claimed under section 90 and 90A. It is rupees 1215. It's lower of both countries' taxes. Credit claim under section 91. This section is applied where DTAA agreement does not exist. So in this case, I am writing 0 here. And the last section, total foreign tax credit claimed. In this column, total amount of credit claimed will be automatically populated based on our total claimed under section 90/90A and under section 91. Now click on the save button. Again click on the save button. Then go to part B. In part B, there are 2 questions. First, whether any refund of foreign tax has been claimed in prior accounting year as a result of carry backward of losses. If you have any losses and you claimed refund, then click on yes and click on add details. Here I am clicking on no. And the second question, whether credit for any foreign tax has been claimed which is under dispute. अगर कोई फॉरेन टैक्स जिसका क्लेम किया गया है वो डिस्प्यूट में है, then click on yes, add details. Here I am clicking on no. Click on the save button. Then click on verification and verify your details. And the last part is attachment. Here you need to attach certificate or statement and proof of payment and deduction of foreign tax. Click on attach file. Attach your form. As we discussed, US provide form 1042S. Here I am attaching form 1042S as TDS certificate. Then click on the save button. Click on the preview and preview your details. Then click on proceed to e-verify and submit your form 67. Please write your queries and doubts in comment section. एंड जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ITR 2 पे, जिसमें हम जानेंगे हाउ टू फाइल ITR 2 विथ फॉरेन एसेट्स. अगर आपके पास भी कोई फॉरेन एसेट्स हैं लाइक शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, देन यू विल हैव टू फाइल ITR 2 एज पर इनकम टैक्स एक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.